and has more than 15 years of experience. She has conducted more than 1,500 workshops in different prestigious schools, colleges, universities, MNCs, corporate organizations, NGOs, etc., and is a key resource person with CBSE for various capability building programs. Gagandeep ma'am is an author to 24 books and was nominated for Nilofer Award at AIMS in 2009. Recently, she was honored by Miss Sudha Chandran, film and TV actress and a renowned dancer for her excellent work in field of psychology. Also, she shared the stage with Miss Sharmishta Mukherjee, daughter of India's former president, Dr. Pranab Mukherjee, while addressing several students from Delhi University. She appears constantly on various news channels such as NDTV, Sahara Artstak, ZTV, India Today, Network 10, and her articles are a regular feature in Dainik Jagran, Hindustan Times, etc. Kudos to you, Gagandeep ma'am. Thank you. So it's I will just a minute, Ribaji. In addition to whatever you say, I would say that she's a gem of a person who's always available to all her friends in the time of need. Not only need, she always remember and recalls people people with their fond memories. And I'm privileged to be to have her as one of my best friends and batchmates during time of my masters. And she's not only a great clinical psychologist, and she's also a wonderful person. So जैसा इनका नाम है गगन, ये उस ऊंचाई तक जाएं, यही ईश्वर जी से कामना है। और इनको बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामना के साथ आज मैं वेलकम कर रहा हूं। गगन मैडम, it is a proud privilege to be connected to you. So over to you, Riba ji, again. Thank you. Thank you, sir. Now I take a moment to address few points to all the members of this group. This session will be for an hour, which we will try and record. The session will be delivered in two parts, talk by Gagandeep ma'am, followed by question and answers. Request all attendees to keep yourself on mute throughout the session. In case you have questions during the session, please feel free to put them in the chat box and I will request ma'am to answer them towards the end. Before I hand it over to ma'am, let me read a quote by Leo Buscaglia. A loving relationship is one in which the loved one is free to be himself, to laugh with me, but never at me, to cry with me, but never because of me, to love life, to love himself, to love being loved. Such a relationship is based upon freedom and can never grow in a jealous heart. These sentences have a very close relationship to what ma'am is going to enlighten us with today. The topic for today is secret behind happy relationships. Over to you, ma'am. Thank you so very much. A very, very good morning to all of you. I think it was a very, very warm welcome. Before I move further, I'd like to express a lot of gratitude to Dr. Tosendra, who was not my batchmate, he was my senior. And वो मेरे senior ही रहे हैं हमेशा. So I'm very grateful to him for being there. And thank you, Ribaji, and everyone. I think the team of Young Psychologists of India. I love the quote that you began with. Although you've asked people to ask questions in the end, but guys, I would appreciate अगर हम साथ बातचीत करें. So while I'm talking, please feel free to unmute and respond simultaneously. It becomes more easier. I'll try and restrict my talk to 20 minutes or so that we can have more discussions around it. And yeah, you want to say something, Tosendra? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's your platform. Please take the call the way you want to conduct it. And we are keen to hear and learn from you. We all. So please. So much. I think I learned a lot when you were my senior. I still remember the difficult book on Freud that we had in the history of psychology. We used to do notes for that. Thank you. Thank you for appreciations. All right, guys. Guys, इसी कोट से शुरुआत करते हैं यार. इनफैक्ट जो रीबा जी ने पढ़ा बहुत खूबसूरत कोट है. जितना आसान था पढ़ना, शायद इसे साधना अपने जीवन में उतना ही मुश्किल है. बहुत सारी बातें बहुत मीठी मीठी लगती हैं. And even before I move even on any elaborations, all of you can raise your hands here to the questions that I ask. How many of you actually want to have happy relationships? Just raise your hands here. I think everyone.
Yeah, so I guys respond, it becomes easier. If you want to unmute yourself, open your cameras, it is nice. The choice is yours. You can also respond in the chat box if you are feeling hesitant, but do respond. I'm going to open my chat box. Where is this here? And request everyone to be on camera, It please. becomes easier, guys. It's a wonderful session. So please switch on your camera and be active on the chat box, guys, at least. Oh, wonderful. Many of you, Ashish, Anam, Gumati, Jasroop, wonderful. अच्छा यार ये बताओ, चाहिए तो हम सबको बढ़िया relationship. But before I even move on, let's ask you guys, यार, why do you want a relationship? हम मोहब्बत क्यों करते हैं? हम शादी क्यों करते हैं? Quick comments. Because if my reasons are correct, the outcome will obviously be correct. Thank you, Jitendra, for opening your camera. Shalini, Yashri, everyone, very quick, yeah, respond. क्यों करते हैं? To be happy, okay. बहुत मजेदार है, करो करो. We are all social beings and we are not here to remain isolated. We are here for each other. So we need company. We are social beings. So we For are there. coexistence. For coexistence. Okay, for coexistence. Because what I'm going to respond, some of you may have a very different view to it. Anyway, so to be happy, coexistence. All right. And To then share our happiness and our worries. wonderful. Share our happiness and worries. Companionship. और क्यों करते हैं यार? Feel loved. Awesome. इसी का तो इंतजार था मुझे. और to move ahead together. To move ahead together, Dinesh was awesome. Apart from Dinesh, so far, Abhi, I'm still waiting for the correct answer. None of these are correct answers. I'm sorry to disappoint you in the beginning itself. It's such a fabulous session, guys. Please respond. It's such a good session. Please respond in the chat box. All right, fulfillment. To feel complete. चलो एक मजेदार बात बताते हैं आपको. Guys, many of you responded very well, and I'll be very honest. Many years back, when I was fairly young, like I'm now around 45, something like that. I'm pretty old now. But many years back, when I was very young like you, I used to feel the same. That I would rather form a relationship where I feel loved, where there is trust, where I feel valued, where the other person makes me feel worth it. But I was absolutely wrong. And I'll tell you how this happened. And ये सारे जो हम चाह रहे हैं ना guys, ये outcomes होते हैं, causes नहीं होते हैं. Now let's look at the quote that Reba ma'am said. I'm just going to pick up one line. I was just noting it down when she said, it says, loving relationships are one in which my lover is free to be oneself. मतलब जहां हम किसी को तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मैं बोलती हूँ कि मुझे belongingness चाहिए, I want to be loved, I want to be respected, तो क्या हो रहा है? यार तुम ऐसा नहीं करते, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मेरा मान नहीं रखा, तुम ऐसे क्यों करते हो यार? Why don't you understand I want this in life? Why can't you change? Why are you so stubborn and rigid? Why is it that you always irritate me? तुमको मैंने कितनी बार बोला है ना कि मुझे पसंद नहीं है, तुम फिर भी करते हो जानबूझ के. You don't love me at all, yeah. You don't even care for me. My happiness doesn't matter to you. तुम्हें बस अपना अपना पता है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा खानदान बस ठीक है, मेरा क्या? Don't we make so many such comments in our relationships, guys? Even as boyfriends, girlfriends, forget about marriage, that's a later story. Even in that, we make that. When I say I need a companion, don't we question कि यार जब मुझे जरूरत होती है तुम थे नहीं, तो अब क्या करूं मैं इस रिश्ते का? It is not about convenience, no? तो फिर कहाँ से आता है? Guys, around 1.5 years back, my life went through a roller coaster. Tosendra knows very well about it. And that's when I began to question my life. And I'm picking up something that made me look at life and specifically relationships from a very, very different perspective. I may sound very, very old and Babe Adam types, but it may make sense because people are people no matter what happens. And few relationships like love, jealousy, hatred are still there जब से संसार बना है. So I don't think it will ever change from Satyug to Kalyug. It'll remain the same. Guys, nearly 1.5 years back, I went through a very big nonsense in my life where I had developed ulcers. They could have been cancerous and a lot of nonsense. And someone whom I had invested so much in, someone who was the part of my world, probably जिसको मुझे लगता था कि मैं अपनी आत्मा से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, शायद ईश्वर से भी पहले उसका नाम लिया, सामने वाले ने ही बहुत सॉलिड दगा दिया. एंड वो पॉइंट था जब मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई
एंड अब मैं सोचने लगी यार ये क्या होता है सीक्रेट टू हैप्पी रिलेशनशिप्स, यार ऐसे क्यों, क्या कमी रह गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, या इस लाइफ का, इस जिंदगी का क्या अर्थ है. And that's when I started reading Mahabharata, Ramayana, Gita. I finished all of them. Almost twice I've read them. Now I'm moving to Quran and other literatures to make sense of life in general and yes, relationships. And I'm quoting something from there which may make a lot of sense to most of you. And please feel free to differ. I'm glad, Anam, you find it relatable. Please feel free to differ, guys. You can question me at any point because this journey wasn't easy for me. And I'm quoting a conversation, Ramayana में, जब राम सीता से शादी करने की बात करते हैं तो सीता के 3 मामा होते हैं. तीनों मामा ऑब्जेक्ट करते हैं. और किस बात पे ऑब्जेक्शन होता है? बिकॉज उस जमाने में तो गुरुकुल होता ही था एंड एवरीबडी यूज्ड टू वैल्यू. राम को भी गुरुकुल भेजा गया था उसके भरत एंड बाकी भाइयों के साथ, 3 भाइयों के साथ, राइट? एंड सीता हैड 3 अदर सिस्टर्स. एंड सो व्हेन दे वर ऑल देयर, सो जब वो गुरुजी से बोला भी आप निकालें, तो उन्होंने बोला राम एंड सीता की तो कुंडली मैच करती है, 36 के 36 गुण मैच करते हैं. तो ऐसा, अरे वाओ, दिस इज एन ऑसम कपल, यू नो, वी शुड डेफिनेटली गेट मैरिड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड इट वाज सीता's mamas who said definitely not, because 36 गुण मिलने के 2 अर्थ होते हैं. either they'll be very happy or they'll have a life filled with कष्ट. And that is why कुंडलियों में भी पंडित जी से जब आप बात करते हैं कि यार पंडित जी कितने गुण मिले, तो पंडित जी बोलते हैं 36 नहीं मिलने चाहिए, फिर सीताराम जैसा वियोग होता है. पर बात वियोग की है ही नहीं है, गाइस. एंड यही सवाल कृष्ण सीता के मामाओं ने राम से पूछा, एंड राम गेव एन आंसर व्हिच आई एम पुटिंग अक्रॉस. ही सेज, वेल, उन्होंने ये पूछा तुझे क्यों करनी है शादी यार सीता से, हाउ वुड यू कीप हर हैप्पी एंड हाउ डू यू गारंटी हैप्पीनेस फॉर हर. ही सेज, to me the secret of relationships is only 2 words. 1, responsibility. Second, gratitude. Let me explain these 2. They were very tough for me to understand that, because जब सुना तो लगा हाँ ये तो हम सब करते ही हैं. But when I went deeper, he says responsibility का क्या अर्थ होता है? That I choose to care for you more than my needs. So relationships are not about seeking. पर जब हम बात कर रहे हैं कि मुझे सामने वाले से खुशी चाहिए, coexistence चाहिए, I want somebody to complete me, I want you to take care of me, that means I am a seeker here. तो मुझे दे क्या रहे हो? मैं किसी रिश्ते में आ रही हूँ उस उम्मीद से कि मुझे मिल क्या रहा है. But Ram says that if you are asking, then what will happen? मैं अपनी खुशी मांगूंगा, तुम अपनी मांगोगे, और obviously we don't marry our mirror images, yeah. We would hate marrying our own self. कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, but imagine no, sitting in front of the mirror and talking to your own self. Would you love it? थोड़ी देर के बाद बोर हो जाओगे यार. And you would want someone different, and you like it or you don't like it. We do end up getting attracted to people who are opposites or who are different from us. Also, चाहे जो मर्जी हो जाए यार, तुम सबकी लाइफ एक अलग हिस्से से गुजरती है. As a husband or as a wife, as a man and a woman, or even as an LGBTQ community, as 2 people, I mean, love applies to all human beings. It has nothing to be a property of man or woman only, right? आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, एज एन इंडिविजुअल आप सबने एक अलग जीवन बिताया होता है, आपके अपने सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपने ही ग्रे एरियाज, शिकायतें, डर, फियर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं. और आप जब किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो उन डरों के साथ आते हैं. आपके फियर्स, आपकी इनसिक्योरिटीज हमेशा सामने वाले को टटोलती रहती हैं, और आप बार बार चेक करते हो. यार मैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, इवन एज यंगस्टर्स, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यार मैं ही फोन करता रहता हूँ, ये तो करती नहीं है. या मैंने मैसेज आज किया, मेरे मैसेज का जवाब 4 घंटे बाद आया, तो कुछ और तो नहीं चल रहा है. सो वी आर कंटिन्यूअसली चेकिंग. देयर इज नो प्रॉब्लम इन चेकिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम इन चेकिंग, बट देयर इज प्रॉब्लम ओनली व्हेन आई फोकस ऑन सीकिंग. मुझे क्या मिल रहा है, मैं खुश हूं कि नहीं, रादर देन मेरा पार्टनर क्या चाह रहा है. एंड दैट्स व्हेन राम सेज, in relationships we falter today because most of us, I'm sorry for being very rough and rude, use and abuse our partners for our own satisfaction and growth. We don't focus on contributing back. We don't focus on यार मेरे पार्टनर की क्या नीड है. एक और सिंपल सी कहानी है हमारे हिंदुइज्म में. आई एम बेसिकली अ सरदार, बट आई मैरिड अ हिंदू आउट ऑफ लव. I think it was love from my side till date. Even when I read the Ramayanas, I think what I was doing was so-called love, and I was walking on the path of what Ramayana says. Well, I didn't know of it, but it was very different at that point. And that's when I came across another thing.
शादी के टाइम पर रामायणा में भी 7 वचन लिए गए थे, और वहां पर एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है जहां वो इन वचनों के अर्थ बताते हैं. इफ आई आस्क एनी वन ऑफ यू, दोज हु हैव मैरिड और इवन दोज हु सेलिब्रेट वैलेंटाइंस, या हाउ मेनी ऑफ यू इवन बॉदर टू लुक एंड अंडरस्टैंड यार ये क्या थे. वो पंडित जी अपने संस्कृत में गड़गड़ गड़ करके कुछ भी बोल के शॉर्टकट शादी होके निपट जाती है. एंड जब हम शादी करते हैं तो हम किस पे ध्यान रखते हैं? या वैलेंटाइंस भी बनाते हैं, ड्रेस क्या है, केक पे क्या लिखवाया है, पीछे वो वायलिन बज रहा है कि नहीं बज रहा है, राइट? खाने का मेन्यू क्या है, कार्ड कितना खूबसूरत लग रहा है, उसमें हमने कौन सी सुंदर कोटेशन डाली है, किस बंदे की, वेस्टर्न हो या इंडियन हो या कोट करके डाली है. हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फोकस ऑन आवर ओन सेल्व्स एंड सो कॉल्ड the 7 promises that we make? मुझे नहीं पता थे, I'll be very honest. I was so excited about my marriage. I didn't even care वो जो बोल रहे थे, बस स्यापा मुकाओ, खत्म करो, was my attitude at that point. I'm being very honest about it. Many years later, when I began to understand the meaning of those 7 vachans, which I'm sharing, and technically your secret of happy relationships lies there, and very simply I'll put things across. अगर समझ सको तो, and ये आज के दौर में भी applicable है, which I'll put across, those 7 vows, certainly. The first vow, और ये रामायणा में बहुत खूबसूरती से दिया गया है, इसका आपको आगे भी एक्सप्लेनेशन कृष्णा के लाइफ में भी मिलता है, महाभारता में भी मिलता है. If you read all of them, there are parallels that you will see. So I won't go in details of all these scriptures. I'm too old to read them. You guys are too young to hear them. But at least certain new things can always be incorporated that bring our life on track. Where the first vachan says, I choose to devote myself to you. Simple सा शब्द है, devote myself. हम सब लोग बोलते हैं, हाँ हम साथ रहेंगे, जैसा कहोगे एक दूसरे के लिए करेंगे, पर devote का अर्थ क्या होता है? I choose, even when we have conflicts with each other, we choose to stand by. वरना आज क्या होता है? Love at first sight and divorce at first fight. Isn't it? जब तक तो अपनी जम रही है, oh you are the best person in my life. जब तक वैलेंटाइंस गिफ्ट मिल रहे होते हैं, जब तक मेरी हाँ में हाँ हो रही होती है, यू आर बेस्ट. जिस दिन नहीं मिलता है सामने वाले से, यार नाउ नो इट्स जस्ट बीइंग अ बोझ ऑन माय लाइफ. कितनी बार होता है अपने रिलेशनशिप्स देखो, जब बैंड बजती है एक दूसरे की, कभी भी लाइफ स्मूथ तो जाती नहीं है ना यार, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, आपके करियर्स में भी आते हैं. सो जब तक तो पैसे बीबी को मिल रहे हैं उड़ाने के लिए या खर्चने के लिए, घूमने के लिए, कोई खराबी नहीं उड़ाने में भी, तब तक तो ठीक है. लेकिन जिस दिन तंग हो जाता है हाथ, बस मैंने तो जिंदगी खराब कर दी इस बंदे के साथ, बेड़ा गर्क हो गया मेरा, तो पता नहीं कौन से पत्थर पड़े थे मेरे दिमाग पर, that I married this person. He's useless. I think this is the biggest error of my life, because we choose to be partners only in good times. But when we say the first vachan, that I choose to devote myself to the other, means that we choose to be partners in our bad times too. How many of us are ready to stand by? In Ramayana, Sita chose to go to Vanvas. It was not her fault. Ram का भी fault नहीं था खैर. And Ram 1000 बार सीता से कहता है, क्यों जा रही हो यार तुम मेरे साथ? Why the hell would you go there? And it's going to be a liability for me. I mean, taking care of a woman in a one with all kinds of things will be tougher. You stay here, yeah? I'm going to come back. 14 years, why the hell are you suffering? She says, no, I took that first vow. So when life is rocking and rosy, I'm going to be with you. पहला वचन. That's the first vachan, very simple. And when things are not going great, I stand by with you. The second one says that in a thick and thin, I'm there. By thick and thin, it means अच्छा बुरा वक्त तो है ही है, पर इसका अर्थ ये भी है कि मैं जब डिवोट कर रही हूँ तुमको या तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, इसका मतलब ये भी है यार, ओके लेट मी पुट इट दिस वे, ऐसा तो है नहीं यार कि हमें हमारे पार्टनर से सब कुछ मिलता है. इफ आई आस्क यू वेरी ऑनेस्टली, डू यू थिंक आप अपने पार्टनर्स को वो सब दे पा रहे हो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं? 10 on 10 आ रहे हो? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं कर पाई थी. हाँ 8 and 9 जरूर होता था, एक आधी तो शिकायत रह ही जाती थी सामने वाले की, मैं तो नहीं कर पाती थी. 10 on 10 तो नहीं होता था. तो क्या सामने वाला भी, जब आप किसी का 10 on 10 नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो कर पाएगा? So what I mean to say is that it also means that when few things are not met in a relationship, we still continue to accept the given. So when I'm devoting myself to you means कि तुमसे मुझे जो नहीं मिल रहा, मुझे बाहर कहीं ना कहीं मिलेगा, कोई ना कोई तुमसे बेहतर मुझे हमेशा दिखेगा. एक लड़की को भी दिखेगा, एक लड़के को भी दिखेगा. मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल अफेयर्स इसीलिए तो होते हैं, अरे तू हट कोई नया आएगा,
A lot of time people even say, no, लड़के और लड़कियां बस की तरह होते हैं, बस स्टॉप पर एक छोटी तो दूसरी थाम ली. Very rough and rude statement, right? मगर जो थामी और जो छोड़ी 100% कहीं कुछ नहीं मिलता है. तो चॉइस है. Either you do hip hopping and you make relationships a big basket sale, or you choose to devote and stand in your thick and thin, which is the second vachan, thick and thin, कि जब मुझे तुमसे कुछ चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, I still choose to work around it. A lot of times, you know, there are clients that I see where they say कि यार अपने रिलेशनशिप में सब बढ़िया, बस ये यार मेरा हस्बैंड ना ज्यादा बात नहीं करता है मुझसे, उतना इमोशनली मीठी मीठी बात नहीं करता है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स सामने वाला जो फेसबुक पे है ना वो बड़ी अच्छी बातें करता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लव्ड फील होता है, तो शायद इसलिए मैं बहक गया या बहक गई. पर 100% कहीं मिलेगा ही नहीं ना आपको किसी भी एक बंदे में. और लाइफ आपके सामने टेस्ट हमेशा रखेगी. और एज अनम हैज रिटन, थिंग्स ओन्ड बाय अदर पीपल लुक गुड. ऑब्वियसली दूसरे के प्लेट में लड्डू बढ़िया लगता है. जो आपका अफेयर भी होता है ना 2-4 दिन किसी से, नए नए बड़ा बढ़िया लगता है. जब उसके साथ भी लंबा वक्त गुजारते हो तो वहां भी बोरियत होने लगती है, वहां भी कलेश होने लगते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर मीटिंग पीपल here and there for just few hours, you're obviously putting your best across, yeah, but when you're living 24/7, वो बड़ी सारी irritating आदतें निकल कर आती हैं. कराटे मारते हैं सोते समय, तौलिया सही जगह नहीं रखते, छोटी 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 चीजें. And that will be there in every relationship, yeah. So if you think your relationships are a big basket sale, you can pick and choose. I'm sorry, you'll always be miserable. Because a lot of times today's generation says we deserve the best. So why should I settle for a partner who is less? By the way, I'm sorry, you yourself are going to be less. आप खुद कभी 100 में से 100 नहीं होगे. Think about this. The third vachan says, when the man says that I'm going to earn and bring in as much as I can and it is my responsibility. अब ये पुराने जमाने का चल रहा है. तो रामायणा में man is saying, because at that point men were working, women were not, right? In fact, many of you would know Sita was the only woman and Raja Janak was the only person who taught her daughters. उस जमाने में लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता था. सीता was the one who broke this culture also कि शादी एक ही पार्टनर से चाहिए, because at that point kings used to have multiple women or queens, and सीता ने ये कंडीशन भी रखी थी कि शादी मैं तभी करूंगी राम तुमसे अगर सिर्फ मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, because it cannot be polygamy here. खैर पुराने जमाने में वो polygamy नहीं कह सकते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था. we'll talk about later some other day. When a king used to have multiple women, it was very different. Or Krishna having 1800 wives was very different. That's not polygamy. That's an entirely different concept. We'll talk about it someday later, but let's focus at this. So third vachan at that point says कि मेरा responsibility है कि I'm going to earn, I'll take care of your financial, emotional needs. And at that point also something called as spiritual needs. Because at that point, it was believed that both of us are going to sail through. And the woman says, no matter what you bring, I'll try and keep myself, be happy in it, and I won't have FOMO. आज क्या होता है? मिस्टर शर्मा जी की ने अपनी बीबी को सिल्क की साड़ी ला कर दी, तुम तो मुझे कॉटन की तक नहीं ला कर देते हो. और look at that boyfriend, yeah, or that girlfriend. She's so beautiful and sexy. Look at you, how do you dress up, man? So we are never willing to live by what we get. And if in today's generation, it applies to both men and women that we both are earning, so we would try and fill each other with as much emotional needs and other things that we can. If we change it to the current situation, the fourth says, we'll take care of not only each other, but our family members too. आधी शादियां, आधे रिश्ते तो इसी बात पे टूट जाते हैं, तेरी माँ ने ऐसा किया. शादी के मंडप पर उन्होंने ये सगन कम डाला था. फर्नीचर कौन से टुच्चे जगह से दिया था तुम लोगों ने? वैसे तो बड़े अमीर दिखते हो. मतलब what are we fighting at? Very, very simple, right? तेरे माँ बाप, तू मेरे माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, मैं तेरे माँ बाप के पाँव नहीं छूऊंगा. मैं तो नहीं जाता तेरे घर. मैं बताऊंगा अब जवाई क्या होता है. What is it, yeah? And then even a woman says, अरे मैं बहू हूं, तुम्हारे बेटी नहीं बन सकती. और सास भी बेटी नहीं बनाती. I'm sorry, with due respect. Very few सासे will treat their daughters and their bahus alike. Blunt है, बड़ी साफ सी बात है. Because when my partner turned out to be rude and he was infidel,
And when I questioned my mother-in-law, it seems I shared a very good relationship with her. I thought she is my friend many years tak mujhe laga. Lekin when my husband turned out, or ex-husband now, turned out to be infidelal, and I questioned my mother-in-law saying, कि अम्मा देखो क्या किया इन्होंने. So she said, and that was my last conversation with her. उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी बात नहीं किया उनसे. उन्होंने कहा, बेटा तेरे में ही कोई कमी रही होगी जो मेरा लड़का बाहर गया. And I said, आपकी बेटी यहाँ खड़ी होती तो उसको भी यही कहते, बेटा तेरे में कमी थी तभी हमारा जवाई बाहर गया. She said nothing. So the fourth vachan says we take care of ourselves and each other and our families too. What if, so your parents are equally my parents? इस बात पे झगड़ा हो जाता है. Arvind ji, I request you to please mute yourself. You have to say something, then please go ahead. Arvind ji. एक मिनट. अरविंद जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए. लेट द स्पीकर स्पीक. अरविंद जी म्यूट कर लीजिए प्लीज. Otherwise, the Google team can also mute. Maybe he's not aware of it. हाँ, रीबा जी, अरविंद जी अगर म्यूट नहीं कर पा रहे तो उनको म्यूट कर लीजिए. Okay. थैंक यू. प्लीज गो अहेड गगन जी. कई बारी तो इसी बात पे झगड़ा हो जाता है ना कि तुम्हारी एज अ डॉटर, अब तुम हमारे घर की बहू हो, चाहे तुम अपनी कमाई का ही कर रही हो, लेकिन तुमने अपने माँ बाप को पैसे क्यों भेजे? क्यों? पर ये उस जमाने की बात है और ये बकायदा रामायणा में है गाइस, जहाँ चौथा वचन ये कहता है कि तेरे परिवार वाले भी उतने ही मेरे सगे हैं जितने मेरे हैं. एंड दैट इज व्हाई टुडे वी डोंट ट्रीट आवर इन-लॉज, मतलब बहू चाहे 40 साल पुरानी हो, वो बाहर वाली औरत ही रहती है, वो परिवार का हिस्सा इतनी आसानी से नहीं बनती. एंड आई एम श्योर दोज हु आर मैरिड एंड लिटिल ओल्ड लाइक मी वुड अंडरस्टैंड दिस इवन मोर. Anyways, so if this is like that, do you think your relationships are going to be happy? We move to the fifth vachan. They say that man says it's my responsibility to bring more happiness and joy and not sulk at home. And woman says I'm going to add to this joy. मगर अक्सर क्या होता है, घर आते ही ऑफिस की भड़ास बीबी पे निकलती है, बीबी की सास ससुर की किचकिच पति की बैंड बजाती है कमरे में, तो हम बैंड ही बजा रहे होते हैं एक दूसरे की. We use each others as punching bags. तुम्हारी माँ ने ऐसा किया. The wife would often say to her husband से, मैं क्या करूं यार, मेरी तो दोनों आंखें हैं, ना माँ छोड़ सकता हूँ ना बीबी छोड़ सकता हूँ यार, मैं तो ढोल की तरह बजे जा रहा हूँ. I didn't marry to be, to play the music like a drum on both the sides. But well, you like it or you don't like, being a man, you are a sandwich. So you better learn to balance the two sides. And इसमें ये कहते भी हैं कि दोनों ही लोग, आपका परिवार और आपकी वाइफ, आपकी दो आंखों की तरह होते हैं. दोनों आंखों से जब आप देखते हैं तो ज्यादा साफ देखते हैं. अगर एक आंख बंद कर लें तो बहुत चीजें खो जाती हैं, डेप्थ परसेप्शन खो जाता है. मगर अगर एक आंख को कैंसर हो जाए तो उसे निकाल कर फेंकना ही बेहतर होता है, वरना ब्लाइंडनेस हो जाती है. थोड़ा रफ रूड है, but that's how I am, little blunt on the face. That is how I've always been, guys. But think about it. So therefore, the idea is to bring joys. So even when I am, so what is very important over here is कि मेरी खुशी की responsibility मेरी है, मेरे पार्टनर की नहीं है. एक बहुत अच्छा इंग्लिश मूवी में भी एंड अगर आप देखें तो वहाँ what is that, श्रीदेवी से बोलते भी हैं. श्रीदेवी very beautifully puts across, and my happiness is my responsibility, not my partner's. Yeah, my sorrows are my sorrows, not my partner's. And as somebody said, रीबा जी ने भी शायद कोर्ट में बोला, I can share my sorrows, but that doesn't mean that you solve my sorrows. अपने सरदर्द की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे पार्टनर की नहीं है. पर अक्सर हम क्या करते हैं, यार मैं सैड हूं, तुम कैसे मजे कर रहे हो? Why are you not sad because I'm sad? अरे यार ये क्या बात हो गई? Sixth vachan says we will support each other only in sahi karm. This is important. And इसके ऊपर बहुत खूबसूरत एक बात आती है, which I'll just quickly take up, where they say that as partners we are best friends. In fact, अगर आप कृष्णा एंड राधा की लाइफ को देखें, well they never married each other, they were very good friends. And कृष्णा की जब रुक्मणी से शादी होती है तो वो रुक्मणी से पूछते भी हैं कि तुम मेरी सखी रहोगी या मेरी पत्नी? तो रुक्मणी says, I want to be your wife, not your friend, yeah, because as a wife I have more hug on you. And then Krishna says, well, ठीक है, तो राधा सखी है और तुम पत्नी हो, एंड मैं सारे दायित्व निभाऊंगा एज अ हस्बैंड, पर मेरी सखी तो राधा ही है, परम सखी.
And then later Rukmini understands, where Krishna tries to help Rukmini understands that a relationship without friendship has no meaning. Now what is a friend? यार फ्रेंड वो होता है जो गर्दन पकड़कर गाली देता है मुंह पर आपके कि यार तू गलत कर रहा है, और उसको इस बात का डर नहीं होता है कि आप उसे छोड़ दोगे. Isn't it? मगर हमारे रिश्तों में अगर एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को करेक्ट करने चलते हैं ना, तो दिल पे बड़ी आहत लगती है. तुम ज्ञान दोगे मुझे, अच्छा तुम दोगे ज्ञान मुझे, अपने को देखा है. फिर हम पूरा खानदान और उनकी चेकलिस्ट निकाल लाते हैं, ये वो टा टा टू टू, तुम्हें याद है तुमने क्या किया था. सो आवर सेंसिटिविटीज आर सो पैथेटिक टू क्रिटिसिज्म, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट हैप्पी रिलेशनशिप्स? यार you don't even trust your own partner, forget the other thing on the earth. Yeah, इनफैक्ट जब मैं ट्रस्ट की बात कर रही हूँ तो मुझे से किसी ने सवाल किया, तो बड़ा सही सवाल था, एंड आई डू नॉट माइंड सेइंग इट अक्रॉस. दे सेड कि मैम आपने तो सर पर बहुत भरोसा किया था, टू द एक्सटेंड आपने आज तक कभी उनका फोन चेक नहीं किया. वो 1000 जगह जाते थे, 1000 लोगों से मिलते थे, आपने कभी नजर तक नहीं रखी. आपको नहीं लगता इतना ट्रस्ट करना आपकी बेवकूफी थी? अच्छा, बात तो तुमने ठीक कही है. ऐसा शायद वो बेवकूफी नहीं है. हाँ, ये सच बात है कि मेरी एक आंख खुली रहनी चाहिए थी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सामने वाले ने दिल तो तोड़ा ही, आत्मा को जख्म भी दिया, और बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें भी ले गया. वो एक अलग कहानी है. खैर, दैट आई कैन ऑलवेज मेक, आई डोंट केयर अबाउट मनी. मगर मोर देन दैट मेरा उसको जवाब ये था, यार जिसे धोखा देना है ना, वो कभी भी देगा, आप नजर रखें या ना रखें. और जो गड़बड़ करेगा वो कितने दिन छुपा लेगा. Well, my ex was very good. He could save it for 7.5 years. He fooled me and was living parallel lives for 7.5 years. Awesome. इतना क्रेडिट तो बनता है सामने वाले को. बंदे में दिमाग था कि 2 औरतें एक साथ घुमा रहा था, दम चाहिए उसके लिए, इतना तो बनता ही है. Anyways, मगर as I said कि वो सामने तो आएगा ही ना. एंड इसको मैं ऐसे देखती हूँ कि यार जिंदगी सबका टेस्ट लेती है, ऊपर वाला सबका टेस्ट लेता है. बस सिर्फ इतना है कि शायद मेरा पार्टनर फेल हो गया, वरना ऐसा नहीं होता है कि आपके पास भी ऑल्टरनेटिव्स की कमी होती है. वो चॉइस लेते हैं आप. एंड इनफिडेलिटी एक चॉइस होती है, वो किसी इस वजह से नहीं होता कि आपके पार्टनर में कोई कमी थी. वो अलग बात है जब लोग पकड़े जाते हैं तो दुनिया भर की बातें बोलते हैं, अरे ये ऐसी थी, ये वैसी थी, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ. अरे यार तुम भी तो ऐसे वैसे थे, तो इतने साल क्यों निभाया? और अगर करना ही था तो बोलकर करते कि यार आई एम डन विद यू, दिस इज नॉट गोइंग एनीवे, लेट्स गेट सेपरेट एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू, हु कैन स्टॉप यू ऑन अर्थ. पकड़े जाने पर जब दोष आता है तो वो कितने काम का है, आई रियली डोंट नो. एंड दैट इज व्हाई द 6th वचन सेज कि इफ यू सी योर पार्टनर गोइंग रॉन्ग, इट इज योर ड्यूटी, आइदर ऑफ द पार्टनर्स, अ मैन और अ वुमन, आइदर ऑफ देम, इन एनी फॉर्म. बात सिर्फ इनफिडेलिटी नहीं है, बात है तुमने कोई काम सही नहीं किया, या तुमने इज्जत ठीक से नहीं करी, या समथिंग wrong you did, or the decision in your life that you're taking, I believe it's not the very right one, where it doesn't mean कि आप थोप रहे हो बात, because फिर भी at the end of the day आपकी पार्टनर का चॉइस है, आप नहीं डिसाइड करते हैं उनके लिए. ये जो फ्री विल है ना, टू बी योर पार्टनर, बी वन सेल्फ, उसके साथ ये टैगलाइन आती है कि मैं अपनी राय रख सकती हूँ, थोप नहीं सकती हूँ. मेरे पार्टनर की तब भी चॉइस है, वो मेरी बात को ना माने, वो तब भी ना माने, ये संभव है, राइट? बट सही कर्म में ही साथ दूंगी. और इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन आती है जहां पर मस्त सवाल पूछती हैं रावण की वाइफ सीता से. जब सीता का हरण हो जाता है और वो उसे श्रीलंका ले जाते हैं रावण, एंड सीता बोलती है कि रावण को कई बार समझाती है, यू चेंज योर कर्मा, otherwise you will have to pay for it. And then मंदाकिनी, जो रावण की वाइफ होती हैं, सीता मंदाकिनी से पूछती है, यार मेरे को पता है मेरे पति ने गलत किया है, but is there any way that you could forgive him? He is not changing. What is it that I can do and why am I suffering? और अगर राम ने ऐसा कुछ गलत किया होता तो क्या तुम राम का साथ छोड़ देती? तो सीता बहुत खूबसूरती से कहती है मंदाकिनी को, यार सबसे बड़ी गड़बड़ पता है तुम्हारी क्या है, कि तुम राम का बुरे कर्मों में साथ देते हो. आज अगर राम इतना खराब है, रावण इतना खराब है, तो इसलिए है क्योंकि वो जब भी कुकर्म करता है, तपस्या तुम करती हो, पूजा तुम करती हो, एंड ही इज फ्री.
सारा कष्ट तुम झेलती हो, विच इज नॉट राइट, बिकॉज छठा वचन शादी का ये कहता है कि बुरे कर्म पर करेक्ट करना तुम्हारा काम है. एंड शी वेरी कैटेगोरिकली सेज कि अगर राम ने ऐसा किया होता तो मैं 2 बार उसे समझाती, 3 बार समझाती, उसके बाद मैं त्याग देती. शी यूजेस दिस वर्ड, मैं उसका परित्याग कर देती. I would have left him. I'm sorry. If I am a true partner, I will not going to support you in your. And when something like this happened in my life, I also had to make a choice. मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा, मेरे परिवार ने भी कहा, मैं किसी और का नाम क्यों लूं. कई बारी उन्होंने भी कहा, अरे हर आदमी का फेयर होता है, आदमी होते ही ऐसे हैं. I'm not. This is no comment on any other man, right? I'm just saying what I was told. तो क्या हो गया यार, तुम्हें तो खुश रख ही रहा था ना, तुम्हारी जरूरतें तो पूरी हो ही रही थी, तो क्या हो गया अगर बाहर है तो. एंड दैट्स व्हेन आई हैड टू मेक अ चॉइस. क्या करूं? शैल आई सपोर्ट हिम इन हिज रॉन्ग कर्मा, और शैल आई लर्न टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सामने वाले के को देखते समय जब मैं आईने में आंख मिलाऊंगी तो खुद से मिला पाऊंगी क्या? क्या इज्जत कर पाऊंगी खुद की? क्या रोज एक मौत नहीं मरूंगी? And is it worth it? Suppose कोविड में वो मर गया होता तो जीना छोड़ देते, फिर मेरे घर वाले किसी और का खुट्टा पकड़ के बांध देते क्या? So I had to make a choice. And in fact in Mahabharata also, if you see, बड़ा अच्छा एक phrase आता है where they say, Karan we all know was better than Arjun यार, 100 गुना बेहतर थे अर्जुन से. बट करण के पिता जो सारथी थे वो करण से ये कहते हैं कि अधर्मी का दान भी अभिशाप होता है, और तुम बर्बाद हो जाओगे क्योंकि तुम दुर्योधन का साथ दे रहे हो जो अधर्म के रास्ते पर है. सो अगर आप गलत व्यक्ति का साथ देते हो, वो तो जो होता ही है, आप साथ में बर्बाद होते हो. सो आई हैड टू टेक अ कॉल एंड आई चोज टू क्विट दैट रिलेशनशिप. The last vachan, the 7th vachan says, no matter what I choose to surrender my entire life to an extent that we grow together. यार हम में से कितने लोग एक दूसरे को ग्रो करवाते हैं, कई बारी तो इसी में मर जाते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो. At least my ex said that my major problem with you was that you were more intelligent than me. You earn 5 times more than I do. You're respected more in the society of psychology than I am. You have a better name. I said, but how am I responsible for this? I also work hard. For me, psychology is my love. For you, it is only a source of earning. Even when I am aging, every 6 months, I make it a point, I learn something new. I put in my effort. Yeah, you go put your effort. It is not my fault if television people call me. If yesterday I was on BBC, if I'm everywhere, and I'm the one, मैं तो वैसे भी कोई का डड्डू हूँ, कहीं किसी से बात भी नहीं करती हूँ. I don't even have so-called friends or social life. How am I responsible for this? So I said, you will have to take ownership for your own things. I am ready to support you. I said, 25 books that I've written, आधों पे तुम्हारा नाम है, तुम्हें तो नाम तक नहीं पता किताब का. How more can I help and support? The rest, you will have to do your karma, yeah? You didn't choose to write any single thing. So how am I responsible for your inferiority? It is your job, and I can't be your therapist. You will have to run your own life. पर शायद ये बात सामने वाले को बहुत बुरी लग गई, तो कोई और मिल गया उन्हें जिन्होंने उनको शायद सो कॉल्ड भगवान या मैनहुड का दर्जा दिलाया. सो इन शॉर्ट, इफ आई समराइज, 7 वचनों में आपके सीक्रेट्स टू योर हैप्पी रिलेशनशिप, माय गाइस. वचन नंबर 1 सेज, आई डिवोट माई सेल्फ टू यू, नॉट ओनली थ्रू माई बॉडी बट थ्रू माई माइंड, थ्रू माई सोल. एंड इन फैक्ट एक और कन्वर्सेशन में राम सीता कहती है राम से कि वो प्रेम ही क्या जो देह को छूकर आत्मा को ना छुए, जो देह तक रह जाए वो प्रेम नहीं. और आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं यार, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं हमारे. स्कूल में ही हमारे मल्टीपल अफेयर्स हो चुके होते हैं, छोड़ो कॉलेज तो दूर की बात. आई हैड yesterday a girl, she's barely 24 and she has had a history of 10 relationships. I said 10, 24, awesome. So we are just hip hopping. कर क्या रहे हैं हम अपने साथ? हम अपने आप को भी एक सामान बना रहे हैं. I'm sorry for being very rough and rude. और सामने वाले को भी एक सामान of use and throw कर रहे हैं. और हम उसके बावजूद कहते हैं, why don't I have happy relationships यार?
So this is the first one. The second vachan says that I stand by you in thick and thin, where even bad times I'm there with you. Third, no matter what I earn, we take care of each other's emotional, financial, spiritual needs. We take care of each other and our families also. So girls' family is as important as a boy's family is. Fifth, we take responsibility of our own happiness, of our own. Dinesh, I'll answer your question. Wait. We take our happiness. The fifth vachan says that we take responsibility for our own happiness and our sorrows, and we are here to add joys. We are here to contribute and not seek. And six says we are going to support each other in good karma, not in bad karma. In bad karma, I'm going to rectify you. I will do it, you like it or you don't like it. And the seven says, I surrender, where we choose to help each other grow in as individuals and even spiritually. Because technically, our journey is not this material world. It is beyond this. And in this material world, there are certain things that we need to do. There are certain contributions we need to make, not only for each other, but even to the society at large. So guys, think for a second, अगर दोनों ही लोग शादी नामक या रिश्ते नामक या मोहब्बत नामक घड़े में अगर भरेंगे तो घड़ा खाली कैसे होगा? इनफैक्ट ओवरफ्लो होगा, जो हर बंदे का दामन झोली भर देगा और सरप्लस भी रहेगा, isn't it? So that is why I believe whatever you and I had been talking in terms of we marry or we want people for fulfillment, blah, 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 and for love and for all that, these are all byproducts, yeah, but not the reasons. Since we marry or we fall in relationship for the byproducts, often we find today's generation celebrating 1 week anniversaries. तो उनको इतना लगता है, अरे 1 week चल गई मोहब्बत, क्या बात है. It says itself a lot in itself, isn't it? कई बार तो लोग ये भी कहते हैं, यार एक व्यक्ति के साथ सारी जिंदगी कैसे निकाल सकते हैं, कितना बोरिंग है. ऐसा एक माँ बाप के साथ सारी जिंदगी कैसे निकाल देते हो? एक करियर के साथ सारी जिंदगी कैसे निकाल देते हो? So you have to keep investing in your partners. They are like those plants where you need to nurture each other. But what happens is we take this for granted. I'll do a very quick activity. I know it is 9:45. I'll take only 1 minute and I'll take your questions further. Here, एक काम करो. Try and look at your nose with your eyes. Can you see that? देखना जरा. दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा. हमारे रिश्ते कुछ इस आंख और नाक के संबंध की तरह होते हैं. They are so close and we take them for granted. We breathe with the same nose, but we never see it and we never acknowledge it. And that's what happens in most of our intimate relationships. And then we say, secret क्या है यार happy relationships का? अपने अंदर ही है यार, बाहर नहीं है. कोई ऐसी जादू की पुड़िया नहीं है. ऐसा कोई काउंसलर नहीं है. So you need to work at your own self and not take people for granted. You need to nurture things in life, yeah. और सबसे अच्छी और खराब बात ये है रिश्तों की कि दो तरफा होते हैं. शायद मेरा 14 साल रिश्ता इसीलिए चल गया कि एक साइड से तो कंट्रीब्यूशन आ रहा था. एटलीस्ट आई वाज डूइंग माय बिट. मगर ये बहुत खूबसूरत चलता अगर दो तरफा होता. तो आप सबके लिए भी ये है. सो व्हेन यू चूज पार्टनर्स, बी मोर वाइज, बी फार मोर वाइजर देन आई एवर वाज. टेक टाइम बिफोर यू इन्वेस्ट इन पीपल. Try and have people with a similar maturity level. And trust me, life is going to be beautiful. And relationships are the most beautiful thing on this earth. Dinesh, I am talking about Ramayana from the Janaki story, the Sita's perspective. And Mahabharata is the same Mahabharata that we all know of, which was written by Vedvyas, spoken by Vedvyas, written by Ganeshji. It's the same that I'm talking of. Guys, I'm done. That is all I had to share. Thank you so very much for this platform. Please go ahead and challenge, question, because my understanding of all this didn't come like that. I had to challenge my own self at multiple times. I had to read through every single thing, and that's why I started my journey right from Satyug to Tretayug, Draupayug, and now Kalyug is, and I'm reading every single scripture to make sense of things. And this has certainly helped me as a person. Today, I am very grateful. और जो गीता कहती है कि जिसने आपके साथ बुरा किया उसका शुक्रिया अदा पहले कीजिए. और ये सत्य है
कि मेरा सो कॉल्ड एक्स और उसकी कीप, मैं कीप ही शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगी आज भी, क्योंकि थोड़ा गुस्सा अभी भी है, एटलीस्ट है। और वैसे तो गीता कहते हैं कि आपके मन में आपके दुश्मन के लिए भी कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, पर मैं बेईमानी नहीं करने वाली हूँ। जब तक है सो है, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, वो अंदर से ही आएगा। मगर ये सत्य है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज अगर वो दो लोग इतने खराब ना होते कि मुझे अल्सर ना होता, मैं मौत अपनी आंख से ना देखती, तो शायद ये समय ना कभी पड़ती, ना शायद मेरा जिंदगी की तरफ एक अलग नजरिया होता, ना शायद आज एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, पीस दैट आई एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस दैट आई एक्सपीरियंस इन माय लाइफ शायद कभी ना होता। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। शायद आज ये इंस्टाग्राम दैट आई रन गाइज एंड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई डू शायद कभी ना होते, बिकॉज आई वाज नेवर इनटू ऑल दिस, इट वाज हिज जॉब। आई वाज हैप्पी इन माय क्लिनिक विद माय हस्बैंड, माय लाइफ, माय चाइल्ड। मुझे किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। शायद बहुत कुछ और नहीं हो रहा होता। आज मैं अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फ्री सेशंस, बहुत सारी फ्री थेरेपी साइकोलॉजी में नहीं सिखा रही होती, चाहे इग्नू के स्टूडेंट्स हों, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों। वी डू सो मच फ्री ऑफ कॉस्ट। We are the only ones in India who run an apprenticeship program where we pick up 6 students all over the world, and we don't care which university you belong to, even when you're from IGNOU or not, it really doesn't matter to us. 6 महीने बिना 1 रुपया लिए हम आपको ट्रेन करते हैं in and out. Do have a look at our Insta handle. You will get a series on relationship mantras and lot more. And there is another series called Bitter Lessons of Life. That was my journey that helped me to make sense of life in many, many ways. They are bitter, but they're beautiful lessons and worth it. Thank you so very much, guys, for this platform. Have a look at these programs. YouTube, we do a lot of work, which is absolutely free of cost. There are so many trainings that we're doing. And this came in only because I realized my journey in my life made me realize कि यार अगर मेरी लाइफ मस्त होती ना औरों की तरह, तो शायद मैं अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए सब कर रही होती है। बहुत रफ एंड रूड बात है, मगर सत्य है, मेरे बारे में ही है। आज मुझे बुरा लगता है सोच के, कितनी छोटी सोच थी मेरी, पर यही थी। मुझे ये था कि वी आर डूइंग वेल, वी ग्रो, वी हैव मल्टीपल बिजनेसेस, वी हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज। इनफैक्ट जितनी थी खैर एक क्षण में सब गायब हो गई, बिकॉज मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने सो कॉल्ड हस्बैंड के नाम करी जब उसको इन्फ्योरिटी हो रही थी, टू हेल्प हिम ओवरकम इन्फ्योरिटी। एंड आई फॉरगॉट, रामायणा सेज उसको अपनी इन्फ्योरिटी का खुद ध्यान रखना है, मुझे नहीं रखना है। एंड टुडे व्हेन उसको मौका लगा, वो सब लेके चरपत हो गया। That doesn't matter, but all this shaking in life made me realize कि कितनी क्षण भर की है हमारी लाइफ। If I can't contribute back to this world and I'm off, तो मेरे होने ना होने का क्या अर्थ है यार? And that is why today I choose to contribute back, whatever I can, at whatever level I can. So do have a look at our Insta handles, YouTubes or whatever. Seek whatever you can. Suggest us, criticize us, help us grow more, do something better. Would love to do that. If you have any questions, please ask. Thank you so much for all the lovely comments. Awesome session, wonderful session, whatever you have been writing across. Thank you so very much. Very grateful to having so many such beautiful people in my life. And trust me, guys, ऊपर वाले ने अगर एक व्यक्ति छीना तो 1000 इतने खूबसूरत लोग दिए। मुझे कभी कभी यही नहीं समझ में आता है, मैं शिकायत भी करूं तो किस बात की। शायद शुक्र है ऊपर वाले का, और उन 2 लोगों का भी शुक्र ही शुक्र है। I think you have. Tosendra, we can't hear you. Just a second. Am I audible? You are not audible, Tosendra. Yes, sir. We can Sir, hear you are audible now. You are audible. Okay. now. We can hear you. Reba, ma'am, we can't hear any one of you. No, ma'am. He's audible. Everybody is audible, I think. We maybe. all are audible, ma'am. Okay. Gagan ma'am, am I audible now? Guys, can anybody else also hear Tosendra, sir? Or can Yes, you yes. hear me? Yes. Ma'am, we all can hear. You all can hear him. Okay, wait a We minute. can't hear. I can't hear Tosendra. Oh, So can ma'am, anybody ma'am, else please- unmute and respond? Ma'am, या please मेरे check your side पे कोई connection. दिक्कत है क्या? Ma'am, we are able to hear you as well as him and others also. I can't. I guess now I am audible. Audible, Dr. Tosendra. Now is I it think audible? ma'am has connection issues. Yes, Ma'am, sir. Yeah. I'm not sure how to Yeah, convey yeah. that to her. Reba ji, you are I right. I think- think ma'am has some connection issues. Okay. So, thank you very much, Gagan ji. You gave a wonderful example, buying from Treta Yug, from Dwapar and Ramayana and Mahabharata. It was fabulous. I mean, it was, in fact, the great beginning and end of this session. Hearing from you, it was Gagan ji. Am I audible to you, Gagan ma'am?
Oh, she got disconnected. She will join soon, I Yeah, I guess. think she's Ah, yeah, connecting back. she joined back. Gagan ma'am, am I audible? Oh, yes, sir. So, Gagan ma'am, it was a fabulous example quoting from Treta and Dwapar and Ramcharitmanas, and in fact, शादी के वो 7 वचन वाकई में की हैं, and we all must look at the deep psychological messages behind the rituals of these 7 vows which we take in Ramayana. And what other who can better teach us than the lady who already went through all the ups and downs, and she has been shattered, but look how this lady has made a comeback in her life. Look at her popularity and glory. I'm sure you all will benefit a lot when you visit her Instagram and Unique Psychological Services free programs. Gagan ma'am, I'll be very grateful if you share certain things which I will share to the different 3, 4, 5 WhatsApp group of Young Psychologist of India, so that people get right benefit and right exposure through you under your mentorship. So thank you once again. It was such a fabulous talk, and I'm sure a lot of meaningful messages, takeaway points have been got by a lot of senior and junior people's professionals associated with this group. So thank you very much. I would have loved to speak more on it, but today I am observer to Education Ministry for this NEET exam. I am observer in Noida, so I don't have much to say. I'm completely indebted and full of gratitude towards you. I look forward to hear more often from you, and it is always a learning experience. And I can see a very new divinity and spiritual ingredient in my friend. And I wish you all the best. And once again, I wish that you reach high to the level of your name, which is Gagan. All the best. Ribaji, over to you. Please feel free to express your questions, all the viewers. And Ribaji, you can take over. Thank you, sir. Thank you so much. Any questions that we want ma'am to answer at this point? There is a question Jyot Sarup has asked in the comment box. Can we say that in a nutshell, that when both the partners have altruistic behavior, there should be no misunderstanding? No, they can be misunderstandings. But yes, when we are more altruistic, or when we are willing to work with each other, we'll be more open to question and listen to these misunderstandings rather than forming assumptions about each other and then taking them as truths to work forward on. This is how I like to answer. Misunderstanding क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मगर हम open होंगे. Any other questions, guys, you have? Even if you disagree with anything that I said, please go ahead. Ma'am, we say that in relationship there should not be any conditions. But if we see Mahabharata or even Ramayana also, we have seen that Dhanush was a condition for Sita marriage. Again, she have a condition that she want only a person who is believe in monogamy, not in multiple marriages. So they have put conditions according to that time. But at present time, people say that conditions are not required for relationship. So how you... यशी बेटा, पहले तो हम कंडीशंस का अर्थ समझ जाते हैं. और जब वहां धनुष की प्रक्रिया होती थी तब स्वयंवर होता था. बात सोच कर देखो, अगर आप उस जमाने की बात कर रहे हो ना, तो द वुमन वाज गिवन फ्री राइट टू चूज अ पार्टनर, एंड सिंस शी वाज नॉट वर्किंग, शी वाज नॉट इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, द मैन was someone who had to prove that he is capable of taking care of her. We are talking of the era जब लड़ाई होती थी, wars होते थे. So you would want your daughters to be married to a man or a king who is strong enough to take care of your daughter. तो जो धनुष का या जो they had to show how great they are. It was not only in terms of the physical bulk, but also in terms of their intellectual capabilities. That was their way of selection. ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज हम भी अपने पार्टनर्स को चूज करते हैं, तो हमारा भी एक क्राइटेरिया होता है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, शराब वराब तो नहीं पीता है, अल्कोहल तो नहीं करता है, ड्रग्स में तो नहीं है. तो ये कंडीशंस नहीं है, ये प्री रिक्विजिट्स हैं. These are basics that you look for. Like if suppose I am a vegetarian, I will ensure that if I'm going to a restaurant, I would ask them, non-veg तो नहीं इसमें यूज हुआ है ना, ये प्योर वेजिटेरियन है, तो वो कंडीशन नहीं है, वो चेंज है प्रक्रिया का, how you choose your partners. And there is a difference in the era. Today there are no wars, so we don't want a man who जो धनुष उठा के मार सके. We feel secure, certainly. In fact, अगर आप राधा कृष्ण की लाइफ देखें तो वहाँ कृष्णा बार बार कहते हैं कि एक औरत को एक आदमी की जरूरत ही क्यों है प्रोटेक्शन के लिए. एक औरत अपने आप में शक्ति है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है, और इसीलिए राधा कृष्ण होता है, कृष्ण राधा नहीं होता है.
सीता राम होता है, राम सीता नहीं होता है। पार्वती की शक्ति भी शिव है, मतलब शिव की शक्ति भी पार्वती है। Yes, ma'am. So there are different notions. I think we end up taking things very literally. If we understand the symbolic meaning, it will make more sense, Raja. और कंडीशन क्यों नहीं होती है? रिश्तों में है ना एक कंडीशन, which is responsibility and gratitude. कंडीशन है तो कि देंगे, ले तो मिल तो जाएगा ही, तो लेने की जरूरत नहीं है. Instead of seekers, we'll be givers. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. It was a wonderful session. Thank you. Any more questions, please? Okay. I would take this time to express our gratitude to you, ma'am. On behalf of the Young Psychologists of India, I express our sincere gratitude to Gagandeep ma'am for taking out time and enlightening the audience on the topic of relationships. Ma'am gave us very important takeaways. She beautifully explained to us the secret of a happy relationship by connecting it to the vows that we learned from all of our religious books. After today's insightful webinar by ma'am, we will not just seek, but give in our relationships. We need to be together in all thick and things, and life will be beautiful. Thank you, ma'am, for reiterating and emphasizing on this fact. I would like to express our sincere gratitude to our guide cum mentor, Dr. Tosendra Dwivedi sir, Shobha ma'am, and the entire core group who worked so hard to make this session a grand success. Thank you, everyone. Thank you so much. Over to you, Tosendra sir. I thank my core team. I thank my core team, which is backbone of this Young Psychologist of India: Sheru ji, Reba ji, Narendra ji, Alok ji, Seema ji, and lot many others, Rambha ji and Rahul ji and all. Without you, I'm sure under your guidance and with your support, we are going to cross the number in 10,000 very soon. And we are going to be the huge and the biggest group of psychology serving humanity and serving the psychology and other students and youngsters to make a better life and to bring about a significant difference in the quality of life, to add more smiles. Thank you once again, Gagan ma'am. We want your inputs to make this Young Psychologist of India big. And together, we youngsters like Gagan ma'am and me, we all can take the baton and take it further. Thank you once again, Gagan ma'am. All the best, everyone. You all can leave the meeting. Thank you so much. See you again next week. Thank you so much, everyone. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you very much.